स्पीकिंग ऑफ कोर्स आपका इंटरव्यू और शोएब की बात लाऊं वैसे ये तो ज्यादती हो जाएगी. शोएब asked you for the passes for the first time when he saw you. Yeah. Where was it? Because very few people know आपका वो वाला interaction. Well, actually, a lot of people know. It's all over. But we met in Hobart. I knew him socially before that. Yeah. And and then I was sitting with my father having dinner, and then he walked over. He said the salams and everything. And then they were playing. They were playing a test series against Australia at that point. Pakistan was, and he actually walked in with another cricketer. And then he just started a conversation, and I mean we knew each other, so he asked me when I was playing and stuff, so he said I'll come, and then rest is history, like I said. But he did ask well, I mean surprising actually कि शोएब actually initiated whichever way हो सकता है उन्हें genuinely passes चाहिए या शायद मुझे लगता है more than that I don't think मुझे लगता है उनको genuinely passes चाहिए थे. वहीं छोड़ दिया होगा रेस्टोरेंट में उन्होंने कहा आप जाके देख लेना यहाँ पे my job is done. Did he ask you for number? So he I mean he had to, right? Otherwise how are we going to communicate? आपने अब्बा का तो नहीं दे दिया ना? नहीं मैंने लेकिन ऑस्ट्रेलियन नंबर दिया था ये सोच के कि मेरे पास अब होगा नहीं 2 हफ्ते बाद. हाँ तो I did give the number. I said you can message me on this or whatever and he was not somebody random. मतलब I knew him from before and he was he was someone that was an achiever. So I said ठीक है no problem. And then I gave मैंने सोचा अब क्रिकेटर है तो मैं ऑस्ट्रेलियन नंबर दे देती हूँ अभी वो तो रहेगा नहीं मेरे पास 2 हफ्ते बाद. किसे पता था शादी हो जाएगी, राइट? वो सेम संभाल के रखी है आपने? नहीं अच्छा मैं इतनी इमोशनल नहीं हूँ. अच्छा नहीं. So you're not a hoarder by बहुत सारे लोग हैं स्पेशली स्पोर्ट्स पर्सन. ये जूता मैंने पहली मर्तबा 8 साल की उम्र में कोर्ट में पहना था. You're not? No, you get detached. No, neither is. No, it's not that I get detached. I don't think there's an attachment with the shoe. I'm very practical. So I prefer not to have I prefer to have attachment with people rather than things. So that's so cool. Okay, speaking of again, so अगले हमारे 3-4 मिनट जरा शोएब पे डेडिकेटेड रहेंगे. मुझे कुछ चीज़ और मुझे पूछनी है आपसे. When was the last time you visited Pakistan? Last month. Okay, you were hosted by I think आपने कोई मैच भी देखा था वहाँ पे जाके and then शाइस्ता लोधी जो है she hosted probably I think it was that trip. Okay, nice. So ये जो एक टैग है आपका मुझे हमें तो बड़ा पसंद है. कहते हैं आप इंडिया की बेटी हैं और पाकिस्तान की भाभी हैं. How often do you get this and then have you accepted this कि ठीक है अच्छा ये है तो है? I mean I think initially when I was like 23 years old it was a bit hard for me to accept myself as a bhabhi. I think it's a cultural thing as well. लेकिन पाकिस्तान में I've realized that it's very cultural and it's respectful to say bhabhi. So I've understood that obviously. We've been married for a long time and I've accepted it. I think it's really nice the way people the way they address you and they respect you. I think it's very sweet. You're okay with bhabhi? Yeah, I mean, I'm 34. I'm more okay with it when I was 23, 24. You're getting that. How much do you understand cricket, वैसे? You off stump, leg stump, I mean, I understand a little bit. Nothing special. We don't really. I think people think कि हमारे घर में सिर्फ या क्रिकेट या टेनिस की बात होती है. हमारे घर में क्रिकेट और टेनिस की बहुत कम बात होती है. We don't really sit and just watch. What's a normal conversation on the dinner table? मुझे लगे ये किसी ने ये किस किस्म का सवाल? मैं आपको पूछूं आपकी बीवी के साथ आप क्या बात करते हैं? मैं तो बता सकता हूँ. मेरा एक ही होता है यार ये खाना कैसा बना है. नहीं खैर nothing like that. नहीं मैं पकाती नहीं हूँ तो मेरे पे नहीं आता वो. खाना कैसे बना है? बहुत ही मैंने फुल टिपिकल जवाब दिया है कि भाई बीवी की बात हो रही है तो खाने की बात करो. शर्म आनी चाहिए मुझे. आई एडमिट इट. थैंक यू सानिया. अच्छा मुझे सानिया बात बताइए. यू आर एक्चुअली वेरी गुड एट हैंडलिंग प्रेस. I mean कुछ तो अभी मुझे ट्रेलर मिल गया. but especially I'm not talking about like when you kind of disclosed ठीक है आपकी शादी हो गई थी and then there was huge media मतलब galore जो वहाँ पे था. बट देन उसके बाद या उससे पहले बिकॉज नोबडी न्यू कि शोएब और आपकी जो भी थी मतलब जिस तरह से आपने यू हैड केप्ट इट अंडर रैप्स. तो बट कहीं आप लोग जाते होंगे कहीं मिलते होंगे. हाउ डिड दैट प्रोसेस हैपन? छुप के मिलते थे? जाहिर ही बात है. बट नहीं तो पता कहाँ पे आप ट्रैवल या वो कहीं आते हो? मैं आपको कैसे बताऊं ये बात? एक तो बताते हैं आप. एक कुछ छोटा इधर मिलते थे दुबई में. अगर मैं दुबई में रहती हूँ और आपको नजर नहीं आती तो मैं यू थिंक कि मैं मिल नहीं सकती किसी से बिना आपको मालूम करे. अच्छा तो यार दुबई was the spot. Of course makes sense. Not the spot but it was one of the spots. Okay, few days before you actually posted एक अमीरों की चाय आप पी रही थी. मुझे इसका नाम लेना हमेशा मुश्किल है बट अब आपको याद आ जाएगा. मैं यूजुअली नहीं पीती अमीरों वाली चाय. मैं दूध पत्ती तो एक वो कौन सी जिसका नाम सी से आता है?
क्या था? कमाल करके कुछ थी. I'll tell you, okay. कैमोमाइल टी. हाँ, वही चाय जो सानिया पी रही थी, उसके साथ उन्होंने. अच्छा, ये अमीरों वाली चाय है. ये इससे नींद मुझे अच्छी आती है, इसीलिए मैं पीती हूँ. आप ट्राई करें. भाई अमीरों को नींद भी तो मुश्किल से आती है ना. पता नहीं, उनसे पूछना चाहिए आपको. अच्छा, भाई जरा गोल करके घर दिखाइए जरा. Anyway, so Sania, you are into dramas, like you're pretty much hooked to television, right? Or maybe no, not hooked, but I do watch some. I mean, I've had some whenever I find time. Pandemic में we've all done different things. So I started केक बनाया, Netflix देखा है और हम सबकी कंपनी के स्टॉक्स ऊपर किए हैं. मेरा दिल मेरा दुश्मन कि आपने वो लगाया था पिक्चर. Are you following any of these dramas? Yeah, actually, I'm watching this drama called Jalan, which ended. I find the dramas quite extreme, but they're quite addictive. So I always I know Salman Bhai and Sabeen, who are the Salman Bhai who owns ARY. So they are very dear friends of ours. तो हम जब भी डिनर पे जाते हैं, I was like, सलमान भाई ये उसने क्यों इसे मरा क्यों था, ये फलाना क्यों था. I was like, उसको जिंदा छोड़ देते हैं. He was like, खत्म कैसे करते हैं अगर वो मर, you know. So I'm always asking him these questions, like that he's like, so my husband always tells me, तुम्हें पता है ना ड्रामा है ये, रियल में नहीं हो रही कोई चीज. But I am like that, I get very involved. हाँ. और जलन के अलावा That's it. I'm not watching anything else now. बस मेरा दिल मेरा दुश्मन और जलन. हाँ, अभी खत्म हो गए. अब now I'll find something. आपने वो देखा प्यार के सदके? हाँ, पुराना है ना. नहीं, अब ज्यादा 5-6 महीने पहले की बात. अच्छा, नहीं दूसरा था. Watch it. It's really interesting. Cool. It's quite interesting. Okay, कोई digital show मैंने सुना कि कोई it's in the pipeline. Are you working on it? Are you producing it? No, I've done it. We shot for it already. Oh, you shot? Yeah, so you are the. Yeah, I'm in it. I'm in as a guest appearance, but I play myself in it. It's on. It's actually more of a. It's more of a show to. It brings. There's a lot of things said about in this pandemic about COVID and because of the cough and the minute somebody coughs हमें लगता है उनको COVID हो गया, लेकिन TB के बारे में ये show बना हुआ है. You better not have it, I'm telling you. Bad रैकेट से मार के घर से निकालूंगी मैं तुम लोगों को. But TB के बारे में this show is about that, and it's about bringing awareness about if you get tested for COVID, you've got certain symptoms. और आप ठीक नहीं हो रहे, so don't just think that it's a flu. You could have TB and वो spread भी वैसे ही होता है, just like COVID does. So the show is about that. Okay. All right. Okay. So when do we expect it? It's already on air. I think pehla episode. Yeah, it's come on. It's on MTV. So. Oh, nice. Okay. Sure. We'll keep taking every rule. Sania, a question about relationship advice. The reason why I'm asking you this, of course, I mean you're wearing multiple hats, and you're doing good. All of it. Thanks. But I just wanted to know, have you ever analyzed कि what's working for me? So what is it that's working for Sania and Shoaib? तो नहीं, I think like you said, understanding होती है. There are certain things that go without saying. वो तो every normal शादी में भी होते हैं. By normal I mean जो लोग हमेशा इकट्ठे रहते हैं, साथ रहते हैं. हम लोग तो we spend a lot of time apart. But having said that, I mean it's very hard. It's not easy at all. There's a lot that goes into